फिर इसके बाद आएगा मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस। मिटिगेशन, उसको हम कैसे मिटिगेट करेंगे। प्रिपेयरनेस हमारा क्या रहेगा। प्लानिंग इन इंडिया, मतलब इंडिया में डिजास्टर मैनेजमेंट को लेके क्या क्या प्लानिंग्स है, व्हाट आर द प्लानिंग्स ऑल ओवर इंडिया, एजेंसीज, व्हाट आर द एजेंसीज दोज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर mitigating disasters, what are the roles and responsibilities. In this session we will discuss about that only. Okay, response mechanism in India means इंडिया में आज का डेट में व्हाट आर द रेस्पॉन्स मैकेनिज्म, हम लोग मतलब इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा, हाउ दे आर रिस्पॉन्सिंग और व्हाट आर देयर मैकेनिज्म बाय द हेल्प ऑफ व्हिच दे आर रिस्पॉन्सिंग टू डिजास्टर्स. ओके, सो ये हो गया ऑब्जेक्टिव्स, ये सारे चीज के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे. सो लेट अस मूव टू द क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर. ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ डिजास्टर के बारे में हम जब देखेंगे तो डिजास्टर आर क्लासिफाइड as per origin into natural and man-made disasters. Okay, as per severity, disasters are classified as minor or major as an impact basis. However, such classifications are more academic than real, as major disaster cloud simply be events that received relatively more media coverages. Okay, then let us move to the point. High powered, there is a committee formed known as HPC committee. High powered committee was constituted in August 1999 under the chairmanship of J.C. Pant. Okay, note it down. Under the chairmanship of J.C. Pant, a high power committee was constituted in August 1999. Okay, the mandate of the high power committee was to prepare comprehensive model plans for disaster management at the national, state and district levels. Okay, so this was the first attempt in India towards a systematic, comprehensive and holistic look at all disasters. Okay, 30 odd disasters have been identified by the high power committee. Okay, which were grouped into the following categories. What are the categories? Okay, let us move to that. Water and climate. Okay, there are 5 categories have been identified. High power committee was constituted in August 99. There are another 30 odd disasters have been identified by the high power committee, which were grouped into following categories. Water and climate, the first and topmost. Okay, maximum disasters are coming from these categories, this category. Water and climate. As far as water and climate is concerned, the disaster named as floods, cyclones, tornadoes or hurricanes, cloud burst, heat wave and cold wave, snow avalanches, drought, sea erosion, thunders, lightning. Okay, these are the are coming under the category 1, water and climate region. Okay, the second is geological. As far as the geological condition is concerned, the disasters which are comes under geological are landslides, earthquakes, large fires, dam failures and dam bursts, and mine and fires. Okay, then let us move to the third point, that is known as biological disasters. Okay, so as far as biological disaster is concerned, epidemics, pest attacks, cattle epidemics, food poisoning, these are the categories of biological disasters. Okay, then came to the chemical, industrial and nuclear disasters. In India or all over world, there are many chemical factories are there, industrial factories are there, nuclear plants are there. Okay, so considering those chemical, industrial and nuclear disasters, these are the following: chemical and industrial disasters, nuclear disasters. Okay, then the last and the least, accidental. Okay, accidental disasters are forest fires, urban fires, mine flooding, oil spills, major building collapse. Okay, serial bomb blasts, serial bomb blast, festival related disaster, electrical disaster and fire, air,
road and rail accidents, boat capsizing, village fires. Okay, so these are the disaster. Those are coming 30 odd disasters. Okay, there are maximum disasters are covered over here. Huh? As far as categorically, if you consider, all those are water and climate related, geological related, biological related, chemical and industrial, nuclear plant related, accidental related. Okay, so we have already find out 30 odd disasters. Categorically, it has been divided into 5 categories. One is accidental, second is chemical and industrial, nuclear plant disasters, biological disasters, water and climate, geological. Okay, so if you understood these 5 categories, then only you will find out the 30 odd disasters as far as disaster categories is concerned. Okay, so let us move to the next slide, that is known as overview of natural disaster in India. Okay, so I think Shankar, you are clear? Hello, Shankar, my voice is clear to you? Hello, hello. Yeah, your voice is coming, sir. Your camera is on. Okay, got it. Okay. Clip caption visible. Use Windows switcher to vote. Control D. Your microphone is on. Okay. So then move to the overview of natural disaster. Okay, so let us discuss, before that let us discuss global dimensions of disasters. Okay, global dimensions of disasters. Okay, we need to discuss one by one. Okay, need to discuss one by one. Flood. Okay, so as far as water and climate category is concerned, the first and topmost disaster is floods. Okay, so let us move to the flood. Overview of natural disaster in India. Okay, severity 5% of rainfall is concentrated over 4 months of monsoon, that is June to September, as a result of which almost all the rivers carry heavy discharge during this period. Okay, the problem of sediment deposition, drainage, congregation and synchronization of river floods compound the flood hazard with sea tides in the coastal plains. So maximum area of India are coastal plains, because India is surrounded by three seas. Okay, Bay of Bengal, Indian Ocean and Arabian Sea. So that's the reason India is a flood prone area. Okay, if we consider India, it is a flood prone area. Okay, so in flood, what happens in the timing from June to September, the maximum rainfall happens in India, in these timings, means June to September, as a result of which almost all the rivers carry heavy discharge during this period. Okay, the problems of sediment deposition, drainage congestion and synchronization of river floods compound the flood hazard with sea tides in the coastal plains. Okay, so क्या होता है, the maximum rainfall happens, that's the reason the waters are coming from the coming to the seas, and the seas are unable to accept the high amount of water, that's the reason. And the drainage problem also happens in this time, so that these are the causes, the contributory factors. That's why flood is a major problem in India. Okay, Brahmaputra and the genetic basin are the most flood prone areas. Okay, so Brahmaputra and the Gangetic basins are the most flood prone areas. The other flood prone areas are the northwest region of the west flowing rivers like Narmada and Tapti. So maximum floods are coming in Narmada and Tapti. In the region is फ्लड प्रोन एरियाज आर नॉर्थ वेस्ट में नर्मदा एंड तप्ती जो है
तप्ती नदी जो है इसकी वजह से मैक्सिमम फ्लड्स आर कमिंग over there. Okay, central India and the Deccan region with major east flowing rivers like Mahanadi, Krishna and Kaveri, while the area liable to flood is 40 million hectares. The average area affected by floods annually is about 8 million hectares. So maximum the area which is 40 million hectares. Apart from that, the average area affected by floods annually is 8 million hectares. So almost 40%, 40% of area is always affected by floods. Okay. So let us move to the second, that is known as droughts. India has a largely monsoon dependent irrigation network. Okay. So droughts का मतलब क्या है? जहां पे पानी का कमी हो जाता है. फ्लड्स का मतलब क्या है? जहां पे पानी ज्यादा हो जाता है. ओके, तो ड्रॉट्स का मतलब क्या है? पानी का कमी हो जाना. ओके, इन इंडिया देयर आर मेनी रीजन्स वेयर फ्लड्स आर हैपनिंग एंड मेनी रीजन्स दोज आर अफेक्टेड बाय ड्रॉट्स एज वेल. ओके, इंडिया हैज ए लार्जली मानसून डिपेंडेंट इरिगेशन नेटवर्क ऑन erratic patterns, both low less than 750 mm and medium 750 to 1125 mm. तो ये इतनी बारिश अगर इससे नीचे होता है तो हम उसको डिक्लेयर क्या करते हैं? ड्रॉट एरिया में. मेक्स 68% ऑफ द टोटल एरिया vulnerable to periodic droughts. Okay, a 100-year analysis reveals that the frequency of occurrence of below normal rainfall in arid, semi-arid and subhumid area is 54 to 57%. Severe and rare droughts occur in arid and semi-arid zones. Every 8 to 9 years, the semi-arid and arid climatic zones are subject to about 50% of severe droughts that cover generally 76% of the area. In this region, rare droughts of most severe intensity occurred on an average once in 32 years, and almost every third year was a drought year. Okay, so that is the main region. Sometimes the rain over here is raining more than average. Sometimes the rain is not raining below the average factor. Okay, that's the reason drought is coming in every 3 years of gap timing. Okay, then let us move to the cyclones. Okay, so first was flood, second was a drought, and third was cyclone. India has a large coastline. There are two distinct cyclone seasons: pre-monsoon, it is May to June. Pre-monsoon मतलब before monsoon, May to June, and post-monsoon, October to November. The impact of these cyclones is confined to the coastal districts. Okay, the maximum destruction being within 100 kilometers from the center of the cyclones and on either side of the storm track. Most casualties which is most casualties coming casualties are caused by coastal inundation by ट्राइडल वेव्स. सो मैक्सिमम कैजुअलिटीज कहां से आता है? जो वेव्स की ट्राइडल वेव जो होता है वो ट्राइडल वेव की वजह से मैक्सिमम कैजुअलिटीज आर हैपनिंग ओवर देयर. स्ट्रॉम सर्जेस एंड टोरेंटियल रेन्स. तो ये जो स्ट्रॉम सर्जेस जो है एंड टोरेंटियल जो रेन्स है वो जो मतलब जब बारिश होता है उसको पूरा एकदम हवा से ऊपर से लेके वहां पे बारिश करता है, तो उसकी वजह से मैक्सिमम कैजुअलिटी हम लोग वहां पे फेस करते हैं. ओके, सो द अनदर इज earthquakes. ओके, सो डू यू नो, एवरीबडी must have to know what is earthquake. When there is a quake in the surface of the earth, that is known as earthquake. When the earth is quaking a lot, that is known as earthquake. Why earth is quaking? Because we'll discuss it in later regarding earthquake management system. How do disaster responders do and what they do at the time of earthquakes, what to do, what not to do, do's and don'ts at the time of earthquake. We will discuss later on. Okay, so let us move with this only. Earthquakes. The Himalaya mountain ranges are considered to be the world's youngest
fold mountain range, the subterranean Himalayas. Why Himalayan mountain ranges are considered to be the world's youngest fold mountain ranges? Because the total Himalayan region, it is science always proven it that the Himalayan region is only made up of by the earthquake impacts. The Mount Everest, the all the Himalayan peaks is known as the youngest because Himalaya is the Himalaya is formed by the impact of earthquake only, and after that, after the Himalayan formation, there are no big earthquakes noticed. So that's why people are considering, or the scientists are the considering that Himalaya is the youngest mountain fold mountain ranges. Okay. The subterranean Himalayas are geologically very active. In a span of 53 years, 4 earthquakes exceeding magnitude 8 on the Richter scale have occurred in this region. Okay, so we have noticed 3 new words, that is earthquake exceeding magnitude. One is magnitude 8, another is Richter scale have occurred. Richter scale is a scale in which the magnitude of the earthquake is measured. Okay, so there is no instrument, or there is no mechanical devices which is capable enough to measure the magnitude of earthquake, but still today we have a Richter scale in which the magnitude of earthquake has been measuring. Okay, the Richter scale varies a range from 0 to 12. Okay, 0 to 12. It means if the Richter scale shows 1 to 3, then it is a minor earthquake. Okay, minor means only shaking is there, no structural damage is there. That it is very minimal in nature. Okay, then if the Richter scale shows that the magnitude of the earthquake is 3 to 6, the magnitude of the disaster is 3 to 6, then it is little bit high. Means earth is shaking and the building may collapse. It may not, but may collapse, and the structural damage may happen, like that. Okay, if the Richter scale identified that the magnitude of the earthquake is more than 7, it means 7, 8, 9, 10, whatever it may be, up to 11, 12, then the earthquake is in a bigger manner. The earthquake is in a high intensity manner. Okay, region. The peninsular part of India comprises stable continental crust. Okay, although these regions were considered seismically least active, and earthquake that occurred in latter in Maharashtra on the September 30, 1993 of magnitude 6.4 only on the Richter scale caused substantial loss of life and damage to infrastructure. What it means? 3 to 6, above 6 is high intensity. So that's the reason the property damage is there, infrastructure damage is there, and the life, many people losses their life in the earthquake. Okay. So we'll discuss later on a special slide I have with me. We'll discuss in later regarding earthquake, how we'll manage if earthquake happens, do's and don'ts, हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. जब बिफोर earthquake there is no predictions. अभी तक दुनिया में ऐसा कोई मशीनरी या इक्विपमेंट, ऐसा कोई टेक्निक्स आया नहीं जिसके थ्रू हम लोग को पता चलेगा कि earthquake क्या है, मतलब एक्सपेक्ट कर सकेंगे. कि आज जैसे हम लोग को बताया जा रहा है कि टुडे देयर मे बी ए हेवी रेनफॉल, बट कभी भी आपको ये सुनने को नहीं मिला होगा कि काल earthquake होगा. ये आज तक दुनिया में ऐसा कोई मशीनरी है नहीं. लेकिन हाँ, डेफिनेटली there are some structural events are there. Geological Survey of India established some regions, and at that region they settled something, मतलब by the shaking, by the set, मतलब प्लेट्स का मूवमेंट जहां पे होता है वहां पे थोड़ा बहुत उनको पता चलता है, लेकिन that is not 100% correct. Okay, they are only assuming, but assumption is not also not a perfect manner.
It is not in a good manner, but we can measure the magnitude. Mechanism already been constituted, and mechanical devices are there to measure the magnitude of the disaster. Okay, so let us move to the landslides and avalanches. Okay, so what do you mean by landslides and avalanches? Okay, when landslides, okay, let us move. The Himalayan, the northeast hill ranges, and the western ghats experience considerable landslides activity of varying intensities. River erosions, seismic movements, and heavy rainfalls causes considerable activity. Heavy monsoon, heavy monsoon rainfall, often in association with cyclonic disturbances, results in considerable landslides activity on the slopes of the western ghats. So हिमालयन का जो माउंटेन्स है वहां पे क्या होता है, जब भी कोई मतलब यार्थ का क्रॉस्ड एरिया में जब भी कोई मतलब प्लेट्स का मूवमेंट्स होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वो जो वेस्टर्न घाट्स एरिया जो है वो एरिया में क्या होता है, लैंडस्लाइड्स ज्यादातर दिखाई देता है, दैट रीजन। और मैक्सिमम क्या होता है, ये जो हिल एरिया में, जैसे हम लोग आजकल क्या करते हैं, डेवलपमेंट के मतलब डेवलपमेंट की तौर पर हम रोड्स कहाँ लेके जाते हैं, सबसे शॉर्टेस्ट वे में लोग लेके जाते हैं। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर पहाड़ी इलाके को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि जब हम पहाड़ी इलाके को टारगेट करते हैं तो हम लोग का जो डिस्टेंस है वो घट जाता है। तो इसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हेवी, वी आर यूजिंग हेवी मशीनरी, हेवी कटिंग मशीनरीज ओवर देयर, यूजिंग सम constructional activities over there, that leads to the landslides activity. Okay, that is the main cause of landslides. One is there. Second, another is there, when the earth crust is shaking, the plates are moving, then that is the alternate way the mountains are go on decreasing, means go on trying to lose their soils in sloper manner, in a sloper manner. So that's the reason the landslides happens. Okay, so as far as avalanche is concerned, avalanche means a simple word, when the rocks, when the soils are in a what it means, ice form, that is known as avalanche. Okay, so in landslides, what it means, it is happens in mountain region. In avalanches, it happens in snow areas or glacier regions. Okay, the glacier regions, when a glacier or when the snows are moving down, moving in a downward way, the track which they possesses for their swimming waves known as avalanche area. Okay, so let us know what is avalanche. Avalanches constitute a major hazard in the higher reaches of the Himalayas. Okay, so generally the avalanches form in a higher region. Okay, part of the Himalayas receive snowfall around the year, and adventure sports are in a abundance in such locations. Severe snow avalanches occur in Jammu and Kashmir, because Jammu or Kashmir is in a higher altitude area. Okay, Himachal Pradesh and the hills of western Uttar Pradesh, the population of about 20,000 in Nubra and Siako valleys, and mountaineers and trekkers face avalanches hazard on account to steep fall. Okay, so these are the regions where maximum avalanches occurs. These are the regions identified our Geological Survey of India. These are the regions identified by our Architectural Department of India, and these are the regions where maximum avalanches happen, named as already discussed. Okay, the following map, देखो ये जो मैप अभी मैं यहाँ पे शो किया हूँ, अब देखो ये मैप में the following map gives the multi hazard vulnerability of the Indian landmass. ये जो एरिया आप दिख रहे हो, देखो यहाँ पे नेचुरल hazards in India, जहाँ पे देखो ड्रॉट प्रोन एरियाज, जो येलो जोन से, जो राजस्थान साइड का, ये देखो ये राजस्थान साइड का जो है येलो जोन्स, और सम एरियाज ऑफ हमारा कहाँ पे, ये महाराष्ट्र का कुछ एरिया आता है जहाँ पे ज्यादा तो बारिश होता है, लेकिन उसका अल्टरनेट एरिया में कम बारिश भी होता है. ओके,
हॉट डेजर्ट्स, ये जो पिंक रीजन है, पूरा राजस्थान का एरिया देखो, जो गर्मी की वजह से वहां पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होता है, जिस एरिया में, राजस्थान एरिया आप मान के चलो, ओके, वो एरिया में क्या होता है, ड्रॉट्स ज्यादा आता है। फिर कोल्ड डेजर्ट्स, जो हमारा थोड़ा ग्रीनरी ऊपर, जो कश्मीर एरिया, आप चलो कश्मीरी एंड पीओके वाला जो रीजन है, वहां पे हम लोग को ज्यादा कोल्ड डेजर्ट्स दिखाई देता है, ओके। फ्लड प्रोन एरिया, जो बीच बीच में जो स्काई कलर का जो लाइन गया है, फ्लड प्रोन एरियाज, दीज आर द फ्लड प्रोन एरियाज, ओके। देन एरियाज अफेक्टेड बाय साइक्लोनिक स्ट्रॉम्स, ये जो व्हाइट के साथ एक एक रेड रेड लाइन दिया गया है, देखो उड़ीसा का मैक्सिमम रीजन, ये जो उड़ीसा का मैक्सिमम रीजन है, आप उड़ीसा मैप अगर आइडेंटिफाई करते हो तो वहां पे देखो कुछ हम लोग का ड्रॉट एरिया भी है, जो हम लोग का आता है कहाँ पे, वो जो कभी कभार हमारा जो पूरा ये एरिया है ईस्ट साइड का, जो पूरा एरिया है, वो एरिया थोड़ा आता है हम लोग का ड्रॉट पोन एरिया में, ओके। बाकी ये जो साइक्लोन स्ट्रोम आप देखो, पूरा जो लाइनिंग दिया गया है, एक एक लाइन खींचा गया है रेड में, पिंक लाइन में, वही जो रीजन है, दीज आर द रीजन्स वेयर मैक्सिमम साइक्लोन स्ट्रॉम्स ऑलरेडी अफेक्टेड एंड दीज आर द प्रोन एरियाज, ओके। देखो उड़ीसा जो है वो पूरा बे ऑफ बंगाल के साथ उसका जुड़ा हुआ है, ओके। इसीलिए हम लोग को मैक्सिमम मैक्सिमम अंडमान निकोबार आइसलैंड, बे ऑफ बंगाल, ये पूरा रीजन अगर आप देखोगे, दिस इज द मतलब मोस्ट हजार्डियस रीजन। बे ऑफ बंगाल में मैक्सिमम, बे ऑफ बंगाल एक प्लेट में, बे ऑफ बंगाल का मैक्सिमम रीजन जो है, उसका नीचे हमारा जो टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट उस एरिया में मैक्सिमम टाइम्स होता है, मैक्सिमम मूवमेंट्स उनका होता है, जिसकी वजह से अंडमान एंड निकोबार, विल डिस्कस इट इन अर्थक्वेक स्लाइड्स, ओके। सो अंडमान निकोबार आइसलैंड जो है, वो एक मतलब जैसे पानी के अंदर एक फूल के अगर हम फेंक देंगे तो क्या होगा, वो फ्लोट करता रहेगा, ओके। दैट इज द कंडीशन ऑफ अंडमान एंड निकोबार, वो हमेशा ऐसे फ्लोटिंग कंडीशन में रहते हैं। मेरा भी आई हैव टू फ्रेंड्स ओवर देयर, दे ऑलवेज फील शेकिंग ओवर देयर, ओके। लेट अस मूव। सो अभी चलते हैं हम डिजास्टर का जो कैटेगराइज किए थे, उसका एक कैटेगराइज था ओवरव्यू, मतलब उसका जो ओवरव्यू है मैन मेड डिजास्टर के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय मैन मेड डिजास्टर? मैन मेड डिजास्टर मीन्स द डिजास्टर व्हिच इज कॉज्ड बाय इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मतलब ह्यूमन बीइंग्स इज नोन एज मैन मेड डिजास्टर। Man-made disasters refer to non-natural disastrous occurrence that can be sudden or longer term. Sudden man-made disaster include structural collapse. सडन मैनमेड डिजास्टर जो है वो क्या करता है, स्ट्रक्चरल कोलैप्स, सडन जब स्ट्रक्चरल कोलैप्स होता है, सच एज बिल्डिंग एंड माइन कोलैप्स, माइनिंग फैक्ट्री जो है, माइनिंग एरिया जो है, माइनिंग रीजन जो है, मैक्सिमम माइनिंग रीजन कमिंग फ्रॉम उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ रीजन, ओके। सो ये जो होता है माइनिंग, मैक्सिमम टाइम में माइनिंग कोलैप्स करता है। और आप देखोगे कभी अगर न्यूज में आप दिखते होंगे तो डेफिनेटली ये माइनिंग जो है वो कोलैप्स करने के कारण 50 या 70 वहां पे जो मजदूर काम करते थे, वहां पे जो इंजीनियर्स काम करते थे, वो लोग उनका जान गंवाए हैं। सो दीज आर द प्रोन एरियाज ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स, ओके। So when this occurs independently without any outside forces, in addition, air disasters, land disasters, and sea disasters are all man-made or International Red Cross Society, as per इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी का ये जो एक गाइडलाइंस है, मैक्सिमम जो डिजास्टर होता है वो एयर एक्सीडेंट्स में ही लोग मारे जाते हैं, वो मैक्सिमम जो होता है वो सी डिजास्टर तो होता है। सी में डिजास्टर कैसे कैसे आता है, कभी कभार हम लोग जब शिप्स में मूवमेंट करते हैं, शिप्स का कैप्साइज हो जाना, वो एक डिजास्टर को लीड करता है। बहुत साल पहले टाइटैनिक जहाज के बारे में आप लोग सुने होंगे, ओके, यू मे हैव हर्ड। सो वो जो हुआ था वो एक सी डिजास्टर में गया था, ओके। सी के अंदर उन लोग का ना कोई अता पता मिला, ना वो कहाँ खो गए, किसी को कोई पता ही नहीं चला, ओके। सो उसको हम सी डिजास्टर में लेते हैं, और मैक्सिमम सी डिजास्टर लीड करते हैं हम लोग को साइक्लोन में, ओके। साइक्लोन में और टोरंटो में वो कन्वर्ट होते हैं बाद में, ओके। So next move to the second point, a comprehensive document prepared by the Transportation Research and Injury Prevention Program, TRIPP, note it down, it may come to your exam for maximum 2 marks or 5 marks question, okay. What do you mean by TRIPP?
ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजुरी प्रिवेंशन प्रोग्राम, ट्रांसपोर्टेशन रिसर्च एंड इंजुरी प्रिवेंशन प्रोग्राम, दिस इज ए प्रोग्राम। ये क्या करता है क्या नहीं करता है आप आगे डिस्कशन करेंगे। ब्रिंग्स आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम इन इंडिया एंड अब्रोड एज वेल। ओके, ये इंडिया में क्या क्या प्रॉब्लम है एंड अब्रोड में भी क्या क्या प्रॉब्लम है, किसको लेके, ट्रांसपोर्टेशन को लेके, ये पूरा उसको आइडेंटिफाई करता है। इट गेव द फर्स्ट ऑफिशियल डाटा ऑफ एक्सीडेंट इन 2002 recording 80,118 deaths and 342,200 injuries on Indian roads, but considered at the same time that many cases went unreported and that 12 lakh required hospitalization. Of the worldwide annual average of 7 lakh road accidents, 10% occur in India only. The latest annual statistics indicate that over 80,000 people are killed on Indian roads. Over 80,000 people are killed on Indian roads. These figures do not reflect the human suffering and social problems caused by accidents. Nearly there lakhs per year sustain injuries. Okay. सो देखो किस पैमान पे रोड एक्सीडेंट्स जो है, मतलब अगर हम सिंपल रोड एक्सीडेंट, इफ यू आर कंसीडरिंग ओनली द रोड एक्सीडेंट्स, देन इफ यू आर कंसीडरिंग इंडिया, सो मैक्स मतलब 80,000 पीपल आर किल्ड ऑन इंडियन रोड एक्सीडेंट्स ओनली। दिस मतलब ये जो फिगर है छोटा मोटा फिगर नहीं, 80,000 पीपल, मतलब अगर एनुअली हम इसको देखते हैं तो 80,000 पीपल रोड एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। सो इट इज ए मैन मेड डिजास्टर कंप्लीटली। Okay, it is a man-made disaster. Okay, so let us move to the next point. It is in India, the man-made disaster category also includes communal riots. So in India is full communal riots are happening in India only because India is a secular country. Okay, Muslims, Hindus, Sikhs, maximum Jains are living in India. So communal right is a common thing. It maximum times due to communal riots, maximum people are died in communal riots, which affect part of India periodically. As in the wake of the Babri Masjid demolition or unabated violence against Dalits, the sub-ethical Northeast Tangle and others, vulnerability studies in this regard would require empirical unearthing of facts with regard to the socio-economic profile of the regions, with a view to pinpointing the exact causes of recurrent violence in the areas. In this regard, generation of awareness among communities, strengthening, generating positive social capital proactively. Though measures like mustering opinion in support of measures to ameliorate the situation, lending active state support to social workers involved in movements towards the same would be some of the desirable activities. So काफी हद तक इंडियन गवर्नमेंट्स क्या करता है, ये सारा चीज को कंसीडर करके कम्युनल एक्टिविटी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज इट इज आल्सो केम्स अंडर ए मैन मेड डिजास्टर। ओके, हेल्थ इज ए मेजर फैक्टर इन डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स। ओके, हेल्थ इज, व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ? Health is a major factor in disaster management efforts. As far as health is concerned, health का मतलब क्या है? जब कोई आदमी एक हेल्दी, हम एक हेल्थ उसका सही है करके कैसे मानेंगे? जब कोई आदमी कोई भी मतलब बीमारी से ना जूझते हुए एक अच्छे दिमाग के तौर पर काम करता है, सही डिसीजन लेता है, सही बिहेव करता है, सही वार्तालाप करता है, तब हम मानते हैं कि उसका हेल्थ कंडीशन अच्छा है करके। ओके, छोड़ो फिर। आज रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड डिजास्टर रिपोर्ट 2004 अक्रॉस साउथ अफ्रीका, HIV AIDS, what do you mean by HIV? Human immunodeficiency virus, AIDS, acquired immunodeficiency syndrome, is combining with food insecurity,
poverty, worsening healthcare, dirty water and sanitization, uncontrolled urbanization and common disease to create an unprecedented disaster that conventional intervention can no longer contain. ओके सो ये भी एक मैनमेड डिजास्टर ही है। HIV है, एड्स से ये क्यों आया, मतलब इनसिक्योरिटी, पॉवर्टी की, फूड इनसिक्योरिटी, इनको खाना नहीं मिला जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ। पॉवर्टी हुआ, पॉवर्टी के कारण भी ये लोग मतलब HIV अफेक्टेड हुए, एड्स में पीड़ित हुए। वर्सेनिंग हेल्थ केयर, उनका हेल्थ केयर दिन बाय दिन खराब होते गया। डर्टी वाटर एंड सैनिटाइजेशन, उनका वाटर इंटेक जो है वो सही नहीं रहा, इसकी वजह से भी उन लोग का ये सब हुआ। अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन एंड कॉमन डिजीजेस टू क्रिएट एन अनप्रेसिडेंटेड डिजास्टर दैट कन्वेंशनल इंटरवेंशन कैन नो लॉन्गर कंटेन। ओके सो द प्रॉब्लम इज नो लेस एक्यूट इन इंडिया। सो इसका प्रॉब्लम जो इंडिया को भी मिला है, इसकी वजह मतलब ऐसा नहीं है कि इंडिया भी इससे बात पड़ा है, उसको तुरंत इंपैक्ट, एक्यूट इफेक्ट इंडिया को मिला था। ओके व्हेयर फिगर्स ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल विक्टिम कीप राइजिंग, द पेस ऑफ इंप्रूवमेंट इन हेल्थ सर्विस डज नॉट कंपेयर फेवरेबल with countries in East Asia and Latin America, where life expectancy is almost as good as developed countries. Okay, so ये जो एशिया है, लैटिन अमेरिका है, उनका जो लाइफ एक्सपेंसेंसी है, वहां के जो लाइफ का उनका जीने का तरीका इज ऑलमोस्ट एज गुड एज डेवलप्ड कंट्रीज। इनका जो लाइफ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वी हैव मेनी डेवलप्ड कंट्रीज, वी आर मेनी डेवलपिंग कंट्रीज, वी हैव मेनी पुअर कंट्रीज। ओके सो जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी लाइफस्टाइल जैसा है, इन लोगों का भी लाइफस्टाइल उससे कोई कम नहीं है। दिस इज बिकॉज इंटर सेक्टर लिंकेज बिटवीन सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, पॉवर्टी alleviation, education, drinking water supply, etc. Okay, have not been duly explored. Okay, in states where such linkage obtained for historical reason or as a result of deliberate effort in this regard on the part of the government, results in health improvement are significantly better than other states. Hence, emphasizes in the 10th plan was on improved logistics with regard to drug supply and diagnostics and exploring systems of healthcare financing, so the essential healthcare is available to all at affordable cost. Okay, 10th plan. So we know in there are many plans, 5-year plans, 10-year plans. So in this the 10th year plan, all these things have been emphasized. Okay. Then the World Health Organization WHO says India scores high on a number of criteria for disaster readiness. So ये हम लोग का मानना नहीं है, इट इज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, इनका मानना है कि इंडिया एक कंट्री ऐसा है जो कि हमेशा हाई स्कोर लीड करता है as far as disaster readiness is concerned. Okay, so the country also earned praise from a global study for its immediate response to the tsunami disaster. So इनका ये भी मानना है कंट्री जो है कभी भी सुनामी आता है, कभी भी सुनामी आता है, so this country is always ready for that. Okay, so वो लोग ये भी बोलते हैं इंडिया इज अमंग द 5 कंट्रीज, मतलब इंडिया वो टॉप 5 कंट्रीज के अंदर आता है इन साउथ एशिया दैट मीट मेनी ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिजास्टर प्रिपेयरनेस एंड हैव ए लीगल फ्रेमवर्क in place for the purpose, says the World Health Organization. Okay, the other 4 countries categorized by WHO as having adequate levels of disaster readiness are Bangladesh, Indonesia, Sri Lanka and Thailand. Okay, India, Myanmar. So these are the 5 countries: Bangladesh, Indonesia, Sri Lanka, Thailand, India, Myanmar. Sri Lanka and Thailand also have a लीगल फ्रेमवर्क इन प्लेस। सो उनका भी किसका, श्रीलंका एंड थाईलैंड, जैसे इंडिया में उनका एक फ्रेमवर्क है काम करने का, तो उनका श्रीलंका में भी ऐसा ही उनका फ्रेमवर्क है, कैसे काम करेंगे, हाउ टू रेस्पॉन्ड टू ए डिजास्टर, हाउ टू रेस्पॉन्ड टू साइक्लोन्स, हाउ टू रेस्पॉन्ड टू earthquakes, हाउ टू रेस्पॉन्ड टू फ्लड्स. देयर इज ए लीगल फ्रेमवर्क in their country as well. Okay,
So let us move to the vulnerability profile of India. So at first, what do you mean by vulnerability? What do you mean by vulnerability? Vulnerability is nothing but it is a categorical things. Okay, the extent to which a community, structure, service, or geographic area is likely to be damaged or disrupted by the impact of particular hazard on account of their nature, construction, and proximity to hazardous terrain or a disaster prone area. ओके, सो ये होता है vulnerability. तो vulnerability क्या है? वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को दिखाता है, उसका स्ट्रक्चर, सर्विस, जियोग्राफिकल एरिया को लेके वो कैटेगोरिकली उनको डिवाइड किया गया है, जिसको हम लोग बोलते हैं vulnerable group. ओके, so let us discuss what are the types of vulnerability. There are two types of vulnerability. One is physical vulnerability and second is social economical vulnerability. So what do you mean by physical vulnerability? Physical vulnerability means according to the physical condition, according to the health condition, according to the physical appearance, according to their genetic appearance, the category is divided into physical vulnerability group. Okay, what do you mean by social economical vulnerability? The people those are socially abundant, the people those are socially boycotted, the people those are socially treated as neglected, known as socio-economic vulnerability group. Okay, so let us discuss. Physical vulnerability relates to the physical location of people, their proximity to hazard zone, and the standards of safety maintained to counter the effect. For example, people are only vulnerable to a flood because they live in a flood-prone area. Physical vulnerability also relates to the technical strength of buildings and structures to resist the forces acting upon them during a hazard event. Okay, socio-economic vulnerability. This is physical vulnerability. What do you mean by physical vulnerability? Depending upon the scenario, means if a flood is affected area is affected by flood. Okay, so in that area, those people who are the people, those will be treated as a vulnerable group or vulnerability group. Those those don't know swimming, those are older people, those though are in pregnant condition, the very small children, infant babies are known as vulnerable group over there. Okay, as far as flood is concerned. Okay, at the same time, in an area where earthquake occurs, structural damages occurs, in those regions, who are the vulnerable peoples? Those are already trapped in the debris, known as the vulnerable peoples. So we need to evacuate them immediately as soon as possible, else their life may be in a threatening condition. Okay, then socio-economic vulnerability, the degree to which a population is affected by a calamity will not purely lie in the physical components of vulnerability, but in contextual relating to the prevailing social and economic conditions and its consequential effects on human activities within a given society. That is known as socio-economic vulnerability. Okay. So let us discuss the steps are okay, just a minute. Following steps are imperative for the vulnerability assessment and preparedness in high risk zones. So what do you mean by assessment and why it is necessary? Okay, so after completion of this lesson or completion of this study, you all will be able to handle a disaster. Okay, so assessment is a part of management. Okay, we never neglect assessment. If you are not able to do proper assessment, then you are also not able to handle a disaster smoothly or in a proper manner. Okay, so let us discuss about that. Identification. What do you mean by assessment? Let us discuss. Identification of various hazard prone areas. So we need to identify what are the type of hazard and the area to which it may affect. Okay, at first preparation of detailed vulnerability profiles. कौन सा वो vulnerable group है जिसको प्रोफाइल है उनको हम टारगेट करना चाहिए. मान लीजिए अभी पूरी
उसको बाद में डिस्कशन करते हैं. ओके, mapping food insecurity, aviation hazard, landslide hazards. So depending upon the hazard, we need to assess the area. We need to take assessment of that area. According to that, according to our assessment, we will prepare our preparedness. Okay. Then vulnerability and risk assessment of buildings. So एक building का vulnerability and risk assessment आप कैसे करोगे? What are the criteria? What are the parameters? What are the things that need to be considered? So it has been declared that the cyclone will hit a area near about 150 kilometers per hour wind storms. Okay, so what are the vulnerability in buildings as well? If there are many big trees surrounded by the buildings, then after the assessment, how you will be prepared over there? We need to cut the big trees. We need to cut off the electricity, because after the cyclonic storm, these are the things that need to be streamlined. Okay, that need to be streamlined. So before that, what are the assessment and what are the preparedness? We need to assess that is the building is capable enough to sustain 140 kilometer of wind race or not. If not, then what to do? If yes, then what are the measures that need to be taken care over there? Okay, these are the things. Developing disaster damage scenarios. So developing disasters डैमेज सिनर. सो डेवलपिंग डिजास्टर्स मतलब ये जो डिजास्टर डेवलप होके जा रहा है वो क्या कौन सा एरिया को डैमेज करने का क्या क्या सिनेरियो बना सकता है, क्या क्या डिजास्टर कर सकता है, ये फैक्टर भी आपको लेना चाहिए जब आप असेसमेंट करोगे तो. ओके, सो डेवलपिंग टेक्निकल गाइडलाइंस फॉर हैजर्ड रेजिस्टेंस कंस्ट्रक्शंस. सो क्या क्या आप वहां पे हैजर्ड को रेजिस्ट करने के लिए क्या क्या आप करोगे. मान लीजिए कि बिल्डिंग के ऊपर ऐसा कोई चीज है, मतलब ऐसा you have constructed something which may damage by the heavy winds. Okay, so what need to do over there? We need to wipe out the things from there. We need to stabilize in a heavy manner over there so that the wind may not affect to that area only. Okay. Then upgrading of hazard resistance of existing housing stock by retrofitting and crafting techno-legal regime to be adopted for infrastructure development. Means what it means you need to take legal support, you need to take the structural building support, you need to talk to the architect department, the architecture, what are the damaging effect may happen to the building if this amount of storm may hit the building. It may be discussed with the architecture, it may be discussed with the civil engineer, it may be discussed with the legal department as well. Okay, development versus environment. Though it is a big topic, we need to cover all the lessons within 4 classes. Okay, so everything is in your book. Okay, you need to study thoroughly, bit by bit, everything is there. Okay, and if you found any difficulties, then you may contact me. I will be available to discuss about that particular matter. Otherwise, I have prepared these slides only, the main topics, focusing on the main topics. Okay, Sir, how so let us. you? Yeah, sure. Sir, I think how we contact you. Actually, you have to mail. You have to give a mail to the regional center. They inform me. Then only we have it discussed. Okay, sir. Okay. Okay. So let us discuss about development versus environment. There are many points. Okay, in your book, if you study, you will find out many points are there, but I think everything is very clear. IGNO materials which has been provided to you are the beautiful materials. Okay, it is my personal comment, because always
जब मैं देखता हूँ ये मतलब इग्नो का मटेरियल को, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बिट बाय बिट हर एक चीज के ऊपर इसका फोकस किया गया है। एंड मुझे मतलब बहुत कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि दिस बुक्स हैव बीन फॉलोड बाय द यूपीएससी एस्पिरेंट्स एज वेल। ओके, सो ये लोग मतलब अच्छे किताब है ये। अब अगर आप पढ़ोगे सीरियसली देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। ओके, Okay, so sir. let us move to the point development versus environment. So इसका ये क्या मानना है इस पॉइंट को अगर हम डिस्कशन करेंगे तो डेवलपमेंट के नाम पर हम क्या क्या डैमेज करते हैं एनवायरमेंट को, और ये लेटर इसका इम्पैक्ट हम लोग को क्या मिलता है। इसका जो इम्पैक्ट हम लोग को मिलता है जिसके बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं, इसका इम्पैक्ट हम लोग को मिलता है डिजास्टर। और आज हम लोग डेवलपमेंट के नाम पर हम अपने एरिया को, हम अपना एनवायरनमेंट को इतना नुकसान कर चुके हैं, इतना नुकसान करते हैं ताकि अभी हम लोग उसी का ही मतलब हम लोग को ही उसको भुगतान करना पड़ेगा डेफिनेटली। अगर हम डिजास्टर मैनेजमेंट को सही तरीके से आज से नहीं जानेंगे, कम्युनिटी अवेयरनेस नहीं होगा, देन वी विल बी द विक्टिम्स इन कमिंग डेज एंड ईयर्स। ओके, सो अभी हम डिस्कशन करें डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट। ओके, so let us discuss developmental activity compound the damaging effect of calamities. So what are the calamities? We are already discussed, natural calamities. So because of development only. Okay, the floods in Rohtak हरियाणा in 1995, आपको सब याद होगा। कभी कभार अगर मतलब डिस्कशन होता है पैनल्स पे, कभी जब कोई डिजास्टर हो जाता है, फ्लड ज्यादा हो जाता है, तो ये जो एरिया है रोहतक हरियाणा में जो फ्लड हुआ था इसके बारे में हमेशा चर्चा होता है मैक्सिमम टाइम्स। ओके, कभी ये देख लेना, द फ्लड्स इन रोहतक हरियाणा में जो हुआ था 1995 are an example of this. Even months after the flood waters had. Sir, like Hirakud Dam flood. Yeah. That is the main point. Like that. Okay. So just a minute. It is clear now? Yes, sir. Okay. So the floods in Rohtak, Haryana 1995 are an appropriate example of this. Even months after the flood waters had receded, large parts of the town were still submerged. Damage had not occurred due to floods, but due to waterlogging, which had resulted due to peculiar topography and poor land use planning. Ad hoc land use decisions are a common practice in our system due to immense demand, public pressures for scarce land supply. ओके, सो क्यों हुआ था ये चीज? ये मतलब उस टाइम का फ्लड ज्यादा नुकसान नहीं किया था, लेकिन नुकसान किस वजह से हुआ था? व्हाट इज द कॉज बिहाइंड इट? बिकॉज द ड्रेनेज प्रॉब्लम वाज देयर। एंड ड्रेनेज प्रॉब्लम क्यों हुआ? क्योंकि वो प्लांट नहीं था, वो जो शहर था वो प्लांट नहीं था। एंड जैसे पानी जाने के बाद वो सबमर्ज कंडीशन में, पूरा रोहतक का जो एरिया है हरियाणा का, वो पूरा सबमर्ज कंडीशन में रहा। जैसे सबमर्ज कंडीशन में रहा तो उसका जो स्ट्रक्चरल बिल्डिंग का जो स्ट्रक्चर था वो बहुत पुअर था। ओके, पुअर होने की वजह से, क्यों पुअर था? क्योंकि कंस्ट्रक्शन लेवल में वो लोग हमेशा ये सोचते थे कि यहाँ पे फ्लड नहीं होगा, यहाँ पे फ्लड नहीं होगा। अगर आप कोस्टल रीजन में रहते हो, इफ यू आर स्टेइंग इन ए कोस्टल रीजन एंड यू आर कंस्ट्रक्टिंग योर बिल्डिंग इन ए पुअर मतलब poor structural manner, then you will be the victim in future days. That is the only example of Rohtak flood. Okay, Rohtak flood which has occurred in Haryana 1995. So what we learn from that incident? We need to construct our building in coastal regions or in every regions in such a way that it may prevent us from many disasters like floods, like cyclones, like earthquake as well. So ये जो एरिया है, ये सब चीज से हम लोग को जैसे बच के रहना है, उसी हिसाब से हम लोग का कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। इफ यू आर मतलब compromising with the civil works, then it
it may lead to a disaster, it may lead to a collapse, building collapse, that ultimately leads to property damage, that ultimately leads to human life damage. Okay, so these are the possibility of damage. Okay, in Punjab, highly chemicalized canal irrigation has lead to large scale salinization and waterlogging as well as ग्राउंड वाटर कंटामिनेशन. ये भी एक चीज है, इसको ध्यान में रखना चाहिए. आजकल डेट क्या होता है, मैं वेरी फ्रैंकली आई एम टेलिंग यू, अभी हम जब भुवनेश्वर को देखो, आई एम स्टेइंग इन भुवनेश्वर ओनली, सो भुवनेश्वर में क्या होता है, यहाँ पे कभी भी कंस्ट्रक्शन होता है, रोड का कंस्ट्रक्शन, सो इट इज कभी प्लान नहीं होता है. कभी आप देखो, पहले रोड को मतलब बिछा देंगे, उसके बाद रोड को मतलब खुदाई करेंगे. ओके, वहां पे फिर क्या करेंगे, तार बिछाएंगे. कुछ दिन के बाद आप देखोगे उसके ऊपर आपका वाटर लाइन लेंगे. कुछ दिन बाद आप उसके ऊपर देखो क्या लेके जाएंगे, इलेक्ट्रिक लाइन लेके जाएंगे. सो दीज आर द थिंग्स. क्या होगा बाद में जाके, ये इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन है, ये इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन होता नहीं है. दैट्स द रीजन कि हम कंस्ट्रक्शन करने के बाद भी उसको दोबारा खोदाई करते हैं. एंड एक डाटा में अगर आपके साथ शेयर करूंगा, इंडिया एक इकलौता ऐसा देश है दुनिया में जहां पे एक काम होता है, मतलब कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट के साथ किसी का मतलब रिलेशन नहीं होता है. इंटर डिपार्टमेंटल जो कोऑर्डिनेशन है, ये इंडिया में मैक्सिमम जगह में दिखाई नहीं देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, यही प्रॉब्लम होता है. और हमारा इंडिया में कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जितना नहीं है, उससे कई ज्यादा कॉस्ट डेमोलेशंस का होता है. एक स्ट्रक्चर को डिमोलिश करके उसके ऊपर नया कंस्ट्रक्शन बनाना, वो ज्यादा मतलब कॉस्ट इफेक्ट को लीड करता है. कभी कभार क्या होता है, अब मैं खुद देखा हूं भुवनेश्वर, मतलब मैं पिछले 23 ईयर से भुवनेश्वर में रह रहा हूं, तो भुवनेश्वर को बारी बारी से मैं थोड़ा देखा हूं. पहले क्या करते हैं, रोड को बना देते हैं, अच्छा खासा रोड, बाबा रे पूरा चकाचक. उसके बाद देखोगे कुछ दिन बाद एक साइड में उसको ड्रेनेज जाएगा. ओके, कुछ दिन बाद देखोगे वो ड्रेन के साइड में आपको और एक नाला लेके जाएंगे, जिसमें आपको कुछ वायर्स जाएगा कम्युनिकेशन लाइन का. कुछ दिन बाद आप देखोगे आपका जो केबल लाइन से उसके नीचे गया. अभी एक ट्रेंड चल रहा है कि पूरा इलेक्ट्रिक सप्लाई अंडर वाटर जाएगा. तो आप सोच के देखो, यही प्रॉब्लम हुआ था इनका जो पंजाब में केमिकलाइज्ड कैनल जो है इरिगेशन का, आर लीड टू ए लार्ज स्केल सैलिनाइजेशन प्रॉब्लम. उनका वाटर लगिंग कंडीशन में क्या होता है, वो जो केमिकलाइट जाके वो कैनल के थ्रू, इरिगेशन के थ्रू क्या जाके उनका जो अंडरग्राउंड वाटर है उनके साथ मिल गया था. उसकी वजह से भी उनको बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ था. आप एक ब्लू उसको क्या हो बोलते हैं, ब्लू, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग दैट पर्टिकुलर वर्ड. एक जगह पे एक इंसिडेंट हुआ था, मैं डिस्कशन करूंगा, उसको मैं लेके आऊंगा आपके पास. ओके, सो groundwater contamination in other parts of India, mega development projects like dams displace millions of people from their homes. हम डैम्स बनाते हैं तो वो कितने बड़े एरिया को, कितने हेक्टर्स, मिलियन हेक्टर्स एरिया पे हम डैम बनाते हैं. तो वो डैम क्या होता है, डैम बनाने के कारण से हम लोग को क्या करना पड़ता है, वहां पे जो ऑलरेडी सेटल्ड है, जो लोग जिनका शेल्टर्स को हम लोग वहां पे तबाह करते हैं और वो लोग को लेके दूसरी जगह पे प्लेस करते हैं. वो भी एक प्रॉब्लम है. एंड सबमर्ज टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फॉरेस्ट, हाँ, फर्टाइल सॉइल्स, उसका जो मतलब वहां पे क्या करते हैं, उनको वहां पे डिस्प्लेस करते हैं, फिर उनको वहां एक जगह पे बैठाने के लिए फिर क्या करते हैं, बहुत सारा वहां पे डेवलपमेंट का भी काम करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को क्या करना पड़ता है, ये डेवलपमेंट तो हम लोग कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट के ऊपर इसका इंपैक्ट हम डाल रहे हैं. सो वी आर डिस्कसिंग द पॉइंट्स, व्हाट इज डेवलपमेंट एंड हाउ इट इज इंपैक्टिंग आवर एनवायरमेंट. Okay, we are discussing that particular points. Okay, so these are the areas, these are the regions already we have experienced the development as comparison to environment. Okay, in a parallel development, many of these large dams with their massive reservoirs may have induced or enhanced seismicity in quake-rocked areas such as कोयना इन महाराष्ट्र. कोयना एक जगह है जो इसकी वजह से उनका सेस्मिसिटी जो मतलब उनका जो सेस्मिसिटी है, क्वेक
मतलब जो थरावट है रॉक्स के अंदर ये ज्यादा महसूस किया गया है, ऑलरेडी ये एनहांस हो चुका है। वहां पे क्या किया गया है, उनका सेस्मोग्राफी के थ्रू, उनका सेस्मियोलॉजी के थ्रू उसको आइडेंटिफाइड किया गया है कि ये डेवलपमेंट के नाम पर ये जो एरिया है वो अभी क्वेक कंडीशन में है, मतलब कभी भी वहां पे कुछ हो सकता है। तो जैसे मैं फर्स्ट पॉइंट में आपको बोला था, अर्थक्वेक जब क्वेकिंग होता है, जब थरावट होता है, जब कोलिजन होता है, जब डाइवर्जन होता है, तो ये सारा चीज जब मतलब अर्थ के क्रस्ट में या अर्थ का जो इनर लेयर है उस एरिया में जब ये सारा चीज होता है तो वो सिस्मोग्राफी के थ्रू वो ग्राफ से हम लोग को पता चल जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे इम्पैक्ट हुआ है। तो ये ज्यादातर मैक्सिमम कोई ना एक जगह है जो कि महाराष्ट्र में ये डिटेक्ट किया गया है। ओके, दिस इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट। A question must have come from this region. What do you mean by development versus environment as far as disaster management is concerned? So आप लोग को ये सारा पॉइंट्स दे के वहां पे अच्छे से लिखना है। आप खुद का भी मतलब एक एरिया चूज कर सकते हो डेवलपमेंट के नाम पर। हम कैसे, how we are disrupting our nature, how we are destroying our environment by the sake of development. Okay, तो आप उसको भी Sir, one example is not Bhopal गैस disaster. ट्रेजेडी, हाँ भोपाल इज व्हाई नॉट, भोपाल गैस ट्रेजेडी एमआईसी मिथाइल आइसोसियानेट का वहां पे जो गैस ट्रेजेडी हुआ था दैट इज द डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट। उसका अगर एक अगर हमको टाइम मिलेगा तो डेफिनेटली वो जो एमआईसी का लीकेज था भोपाल गैस ट्रेजेडी में क्या क्या हुआ था वो मेरा स्लाइड मेरे पास है। अब अगर टाइम मिलता है, मुझे टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि ये सारा टॉपिक्स कवर करना है, ऑलमोस्ट 18 चैप्टर्स आर देयर। ओके, so we need to go fast because we have to cover 18 chapters. Okay, so वो एक चीज था, वो डेफिनेटली आप उसको लिख सकते हो। भोपाल गैस ट्रेजेडी इफ यू आइडेंटिफाइड देन डेफिनेटली इट विल बी ए गुड पॉइंट। ओके, भोपाल गैस ट्रेजेडी क्यों हुआ था, हु आर द रेस्पॉन्सिबल पर्संस एंड हाउ इट अकर्स। इफ इसको अगर आप लिखोगे डेवलपमेंट, उसमें क्या बनता था, मिथाइल आइसोसियानेट बनता था। मिथाइल आइसोसियानेट का क्या हुआ था, वो मतलब गैस लीकेज हुआ था। तो मिथाइल आइसोसाइनेट हाईली टॉक्सिक गैस होने की वजह से इट इज हाईली टॉक्सिक गैस एंड मतलब इट हैज बीन इट हैड बीन इनहेल्ड बाय द by the by the people those are living outside the factory area, outside the plant area. Okay, maximum death around 30,000, around 30,000 people have been affected, almost 8,000 people died in that place, and maximum till today maximum people are facing hereditary problem, they are facing a lot of things are there. Okay, if time permits then we'll discuss a separate topic with that only. Okay, Okay, sir. okay, thank you. Okay, then disaster have come to stay in the forms of recurring droughts in Orissa. Orissa is also a part of drought area. The rectification of swaths of Gujarat and Rajasthan. तो गुजरात and राजस्थान में जो एरिया है where economic depredation continuously impact on already fragile ecologies and environment degradation in the upstream areas of Uttar Pradesh and Bihar. Floods in the plains are taking an increasing toll of life, okay, environment and property, amplified by a huge population pressure. सो ये जो एरिया है गुजरात एंड राजस्थान एरिया में मैक्सिमम ओडिशा का कुछ रीजन है जो ड्रॉट रीजन में आता है, और बाकी ये जो एरिया है बिहार का, बिहार मैक्सिमम, बिहार इज अफेक्टेड बाय फ्लड, मतलब मैक्सिमम एरिया ऑफ बिहार आर ऑलवेज अफेक्टेड बाय फ्लड. And in Assam also, Assam is also a flood prone area. Odisha is also a highly flood prone area. It is, what are the, by this impact, by its impacts, population is always in a danger condition. Okay, so environment is always in a damaging condition, and property loss is always happening in these areas. Okay, are you clear? Okay, so let us discuss what do you mean by disaster management in stages. How you will manage the disaster in a stage, matlab step by step. Okay, so
It is divided into three categories. There are three key stages of activity in disaster management. मान लीजिए कभी डिजास्टर हुआ, मान लीजिए कभी डिजास्टर अकर्ड हुआ, हम लोग एक्सपीरियंस किए, तो उसका हम लोग को क्या करना चाहिए बिफोर डिजास्टर, हम लोग को क्या करना चाहिए ड्यूरिंग डिजास्टर, हम लोग को क्या करना चाहिए आफ्टर डिजास्टर. ओके, सो इट इज नोन एज बिफोर ए डिजास्टर, ड्यूरिंग ए डिजास्टर, आफ्टर ए डिजास्टर. ओके, so all these known as, okay, before a disaster. Okay, to reduce the potential for human, material or environmental losses caused by hazards and to ensure that these losses are minimized when disaster strikes. Before disaster, what it means? To reduce the potential for human, material or environmental loss caused by hazards and to ensure that these losses are minimized when disaster strikes. Means before disaster हम क्या करते हैं, हम ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी बनाते हैं, हम ऐसा कोई बचाव का तरीका बनाते हैं जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, खुद ह्यूमन को भी, खुद को भी बचा लेते हैं, हमारा मटेरियल्स का भी सेव कर लेते हैं, एज वेल एज एनवायरमेंट का भी लॉस हम लोग करने नहीं देते हैं, उसको थोड़ा हम कम कर देते हैं. ओके, एंड इंश्योर ये करते हैं कि वो जितना से ज्यादा मिनिमाइज, हम लोग को जितना कम हो सकता है उसको हम मिनिमाइज करके हम उसके लिए तैयार रहते हैं कि ठीक है. हम लोग को पहले ये सूचना मिला कि अभी साइक्लोन हिट करेगा उड़ीसा को at a speed of 180 किलोमीटर पर आवर. द विंड स्पीड विल बी 180 किलोमीटर पर आवर. ओके, सो हम कैसे खुद को बिफोर डिजास्टर तैयार करेंगे, हम ऐसे तैयार करेंगे कि उस टाइमिंग में, उसका टाइमिंग भी आ जाता है, उस टाइमिंग में वी मस्ट हैव टू ट्राई नॉट टू leave your homes. Okay, you need to stay at your home only. Okay, so in this way what you did, खुद को बचा लिया, खुद को बचा लिया, साथों साथ आपका फैमिली को भी बचाया कि उस विंड के साथ अगर आप काम पे निकलोगे, अगर आप गाड़ी के साथ बाहर निकलोगे, सो डेफिनेटली वो क्या करेगा, आपको ही डैमेज देगा, आपका एक फैमिली मेंबर्स को डैमेज देगा, अल्टीमेटली इट विल लीड टू ए ह्यूमन लॉस. ओके, मटेरियल लॉस कैसे होगा, हमारा गाड़ी गया वहां पे, वो भी डैमेज कंडीशन में आया, हमारा प्रॉपर्टी लॉस हुआ. ओके, फिर और कैसे लॉस होगा, मान लीजिए कि हेवी विंड आ रहा है, हम अपना जितना भी डोर्स है, विंडोज है, उनको सब खोला करके रखे हैं, तो ऑल ऑफ सडन जब विंड्स आएगा तो हमारा घर के अंदर घुसेगा, हमारा विंडोज को डैमेज करेगा, हमारा डोर्स को डैमेज करेगा, हमारा जितना भी इंटरनल मटेरियल है उसको भी डैमेज करने का चांसेस है. ओके, सो इससे क्या होगा, हम अगर बिफोर प्रिपरेशन में रहेंगे तो डेफिनेटली जब हाई विंड आता है तो आप लोग को ये गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज पासेस कर दिया जाता है कि क्लोज योर विंडोज, क्लोज योर डोर्स एंड स्टे एट योर होम ओनली एट द टाइम ऑफ हाई विंड फ्लो. जब आपका हाई विंड फ्लो टाइमिंग होता है वो मैक्सिमम टाइम का नहीं होता है, मैक्स टू मैक्स 2 घंटा, 2.5 घंटा, 1.5 घंटा, यानी कि उस टाइम पे, जिस टाइम तक वो उस रीजन में रहता है उस टाइम तक उसका इंपैक्ट रहता है. वो जैसे ही चला जाता है, यू आर अलाउड टू वॉक अवे फ्रॉम योर होम, यू आर अलाउड टू ओपन योर डोर्स, यू आर अलाउड टू ओपन योर विंडोज. सो हम लोग को उस टाइम पे थोड़ा धैर्य रखने की जरूरत है, तो उसको बोलते हैं बिफोर डिजास्टर द प्रिपेयरनेस. ओके, लेट अस डिस्कस ड्यूरिंग डिजास्टर. ड्यूरिंग डिजास्टर मींस डिजास्टर अभी हो रहा है, एक डिजास्टर अभी शुरू हो चुका है. ओके, मान लीजिए आपको पता था अभी डिजास्टर चल रहा है. ओके, आप क्या करोगे, मान लीजिए आपको पता नहीं था, आप क्या करोगे, वो सारा चीज, वो मेजर्स आपको लेना चाहिए ड्यूरिंग डिजास्टर. ओके, टू इंश्योर दैट द नीड्स एंड प्रोविजंस ऑफ विक्टिम्स आर मेट टू एलिवेट एंड मिनिमाइज सफरिंग. तो उस टाइम वो क्या करेगा, जैसे कि डिजास्टर अभी चल रहा है, वो तो खुद को ऐसा प्रिपेयर करेगा जैसे कि उसको वेरी वेरी मिनिमम इंपैक्ट आए. देखो, ऐसा नहीं है कि इंपैक्ट नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा. मान लीजिए एक अर्थक्वेक हुआ. ओके, मान लीजिए कि अर्थक्वेक हुआ, तो वो अर्थक्वेक में मान लीजिए कि आपका बिल्डिंग कोलैप्स हुआ. ओके, यू आर इनसाइड योर होम. सो ड्यूरिंग डिजास्टर आप क्या करोगे, आपको पता होगा तब तो करोगे, अगर पता नहीं होगा, सो हाउ यू विल फेस दैट डिजास्टर, दैट earthquake will disrupt your life completely. If you know something, then you may survive. Okay, if you don't know what to do and what
what to do, then definitely you will be a sufferer, you will be a victim over there. So you need to know during disaster what are the activities that you have to do and you have not to do. Okay. Then after a disaster, to achieve rapid and durable recovery which does not reproduce the original vulnerable conditions, means after a disaster अचीव रैपिड एंड ड्यूरेबल रिकवरी, हम लोग क्या करते हैं, जैसे डिजास्टर चला गया उसके बाद हम कितना जल्दी उस चीज को फिर दोबारा जिस कंडीशन में सारा चीज था वो कंडीशन को आने के लिए, वो पर्टिकुलर सिचुएशन को आने के लिए, टू रिवर्ट back to that particular condition, what are the strategies that have to be taken care, that should be known by everybody and the management peoples. Okay, are you clear? Yes, sir. Okay, so let us break for 5 to 7 minutes because I need to take some water, huh? I'm coming back within 5 to 6 minutes. Okay.
Hello. 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 I'm audible. Hello, Vijay Lakshmi. Yes, sir. I'm audible. Okay. Yes, sir. Let us start. Huh? Stages in disaster management. Okay. सो अभी हम डिस्कशन करेंगे स्टेजेस इन डिजास्टर मैनेजमेंट डिजास्टर में सर ये डिस्कशन हो गया ना सर इट हैज बीन कंप्लीटेड ओके द डिजास्टर साइकिल okay it is an important chapter the disaster cycle okay if you have the book then study it thoroughly okay after this class study it thoroughly you will understand bit by bit how you manage a disaster okay the whole topic ये जो साइकिल है ये पूरा साइकिल के साथ पूरा टॉपिक जुड़ा हुआ है ओके सो देखो ये है डिजास्टर उसके बाद आ गया शुरू होता है डिजास्टर से स्टार्टिंग फ्रॉम डिजास्टर उसके बाद रेस्पॉन्स आफ्टर दैट रिकवरी रिकवरी के बाद डेवलपमेंट डेवलपमेंट के बाद मिटिगेशन मिटिगेशन के बाद प्रिपेयरनेस ओके सो ये जो 6 स्टेप्स है डिजास्टर रेस्पॉन्स रिकवरी डेवलपमेंट मिटिगेशन प्रिपेयरनेस ओके ये पूरा टॉपिक को अगर आप अच्छे तरह से सीख लिया अच्छे तरह से आपको ये पता चल गया देन ऑलमोस्ट 50 to 60% of disaster management chapter has been covered okay so the main purpose of studying this topic is to know these 6 steps okay so let us discuss about these topics okay bit by bit what do you mean by disaster okay the disaster event disaster refers to the real time event of a hazard occurring and affecting the elements at risk. The duration of the event will depend on the type of threat. For example, ground shaking may only occur for a few seconds during an earthquake. Okay, while flooding may take place over a longer period of time. Disasters have tremendous modifying impact on the physical landscape. Within a few minutes, an entire region is reduced to rubble in the event of an earthquake. The recent tsunami has permanently altered the physiography of event of an earthquake. Okay, affected coastal areas in Sri Lanka, Andaman and Nicobar Island. The impact leads to loss of life and property in affected areas. Losses being directly correlated to the vulnerability of the region, physical and socio-economic. Physically weak structures, vulnerability is also socio-economic. Weaker sections of society women, children, aged, and handicapped, mentally infirm, etc. These are the vulnerable peoples. Suffer a lot more than they are stronger. Okay, so these are the disaster events. If a disaster happens, I am understanding you. Disaster means at first disaster occurs, then how we respond to that okay what do you mean by disaster response हम उसको कैसे रिस्पॉन्स करते हैं उसको हम कैसे फेस करते हैं उसको हम कैसे तैयारी करते हैं उसको हम कैसे निपटने के लिए क्या क्या करते हैं उसको बोलते हैं रेस्पॉन्स हम उसको कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं मान लीजिए कोई हमको एक चट्टा लगाया मान लीजिए someone slapped us okay so how we react so like that when a disaster happens how you are responding to that is known as response okay a disaster is a catastrophic event that has severe modifying impact consequences are both physically and socially to humans communications is disrupted means in a disaster response what is the main factor communication will be totally it will be disrupted infrastructure is affected adversely many buildings giving way completely
critical facilities are disturbed, economic losses occur, loss of employment occurs, ranging from temporary to permanent occurs, development is rendered a severe setback, law and other situations worsens. So these are the disaster responses. After the disaster, these things may happens. Okay, so how you will be come out from that? Only recovery, that will come on under recovery phase. We need matlab, after that significance responses, then recovery will be done. Okay, recovery में हम क्या करेंगे? The recovery phases involves implementation of actions to promote sustainable redevelopment or reconstruction or rehabilitation. ओके, फॉलोइंग ए डिजास्टर. जब डिजास्टर हो जाता है, उसका रेस्पॉन्स में ये सारा चीज हो जाता है. बहुत सारा वहां पे मतलब डिस्ट्रप्शन आपको दिखाई देता है, बहुत सारा बिल्डिंग कोलाप्स दिखाई देता है. वहाँ उस एरिया का बिल्कुल एक ऐसा सिचुएशन आपके सामने आता है जब आप कभी दिखे नहीं हो. ऐसा सिचुएशन आ जाता है. कभी कभार ऐसा होता है, कोई बड़ा बिल्डिंग मतलब पूरा धूल के बराबर हो जाता है. एक बड़ा बड़ा जो काठमांडू में इन द ईयर आई थिंक 1900 सॉरी 2000 और 2015 या 2015 या 16. ओके, जो हुआ था वहां पे जो इम्पैक्ट में, उसका पूरा काठमांडू का ए मेजर पोर्शन ऑफ काठमांडू वाज डिस्टर्बेड बाय अर्थक्वेक. Okay, the Sir, now 2023 in Turkey. Turkey, exactly. Recent even if we consider in Turkey, you know the situation, and our government send our forces, national disaster response forces, have went there and rescued maximum of people over there, and they were treating us like a god. We are god for them at that time of disaster. Okay, so just think about that. So these are the disrupting situations over there. So after that response, what are the recovery conditions? New constructions will be made up, new roads will be developed, new vehicles will be placed over there, new clothes will be required, new houses will be required over there, new education structure would be reformed over there. Lot of things has to be recovered. Okay, school buildings will be, hospitals needs to be reconstructed. Okay, recovery is the activity that returns infrastructure systems to minimum operating standards and guides long-term efforts designed to return life to normal or improved levels after a disaster. Okay, that is the main part of recovery portion. Recovery is also sometimes used to describe the activities that encompasses the three overlapping phases of emergency relief, rehabilitation and reconstructions. Okay, the chief behavioral attribute required in recovery is resilience. Okay, उसका जो vital point है resilience, as highlighted in the world disaster report 2004. Community resilience is a big factor. Remember it, community resilience is a big factor in disaster recovery. Recovery is used to describe the activity which encompasses the three overlapping phases of emergency: relief, rehabilitation and reconstructions. Okay, whenever recovery comes to your mind, then remember these three words: relief, rehabilitation and reconstructions. पहले उनको रिलीफ दो, फिर उसके बाद उनको रिहैबिलिटेट करो, फिर उसके बाद रिकंस्ट्रक्ट करो. It means at the topmost priority should be in recovery phases, must be focused on relief. We need to give them food, we need to give them mentally support, we need to give them moral support. That's the reason they will come back from that region and will believe on you and will take your supports. Unless until, because in a disaster, in a family, if a person losses his father, just think about the moral situation of that child or of that lady. Okay, what will happen if someone's husband is dead over there, if a person's daughter is lost his daughter or lost his son, like that, what is the condition over there? So you need to give them moral support. You give to, if you give to if you need to give them reliefs. What do you mean by relief? Relief comes from many regions. It may be in a food, it may be a consolidation,
it may be a moral support, like that. Relief relates to that only. Okay, relief does not mean that you need to provide food supplements. Relief has many meanings. Okay, so relief, then rehabilitation. You have to rehabilitate them, you have to give them shelters, you have to give them, provide them temporary shelters, you have to provide them clothes, you have to provide them, you have to provide them sanitation. These are the rehabilitation part. Then after, when disaster complete, wiped out, then you need to settle them in reconstruct, build their matlab houses, reconstructed their houses and settled them for permanent basis. Okay, then उसके बाद आ जाता है क्या, रिकवरी के बाद डेवलपमेंट. व्हाट डू मीन बाय डेवलपमेंट? डेवलपमेंट हैज मेनी पैरामीटर्स. ओके, the inclusion of development as a phase in the disaster cycle is intended to ensure that following the natural disasters, societies factor hazard and vulnerability consideration into their development policies and plans in the interest of overall progress. तो उनका जैसे ओवरऑल प्रोग्रेस होगा, उनका स्कूल अभी नहीं रहा, उनका हॉस्पिटल अभी नहीं रहा, उनका प्लेग्राउंड्स अभी नहीं रहा, ये सारा चीज के ऊपर भी आपको फोकस करना पड़ेगा. नॉट ओनली कि यू आप उनको मतलब कंस्ट्रक्ट करके घर दे दिया और उनका जीने का तरीका बदल जाएगा, ऐसा नहीं होगा. आप उनको ऐसा करके देना पड़ेगा, इतना डेवलपमेंट उनको साथ रहना पड़ेगा, ताकि भले ही जो प्रीवियस कंडीशन था वो कंडीशन में ना आ पाए, लेकिन द मिनिमम थिंग्स दोज आर रिक्वायर्ड बाय देम must have to be provided to them, must have to be constructed to them. If hospital is not there nearby, then definitely a hospital should be constructed over there, and they must have to be taken the benefits of that hospitals. If their children are there and they are studying in a school, then school should be constructed over there, and the students may be resilient to their schools as well. Okay, so these are the development parts. Then mitigations. The most vital part is mitigation. What do you mean by mitigate? Mitigation leads to many things. Okay, one is long-term mitigation and another is short-term mitigation. Okay, what are the points in long-term mitigations? Some common mitigations measures are, हम मिटिगेशन कैसे करेंगे? जब हम उसका मेजरमेंट करेंगे. हम मिटिगेशन कैसे करेंगे? जब हम उसका एनालिसिस करेंगे. मिटिगेशन लीड्स टू vulnerability एनालिसिस. पहले हम vulnerability एनालिसिस करेंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे, vulnerability रिडक्शन करेंगे, उसके बाद मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बनाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक्टिविटी करेंगे इन ऑल डेवलपमेंट एक्टिविटी. जो जो वहां पे हो सकता है वो सारा चीज करेंगे. डिजास्टर रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, अवेयरनेस अमंग द कम्युनिटी, प्रिवेंटिंग हैबिटेशन इन रिस्क जोन्स. जहां जहां पे रिस्क जोन है उनको वहां पे हैबिटेट करना पड़ेगा, उनको वहां पे हर वो चीज देना पड़ेगा जहां पे रिस्क जोन वहां पे मौजूद है. ये चला गया लॉन्ग टर्म बेसिस में. as far as short term preparedness is concerned, as far as short term mitigation is concerned, some common preparedness measures are forecasting and warning system for different disasters. तो अगर शॉर्ट टर्म अगर करेंगे तो अभी मान लीजिए अभी अर्थक्वेक हुआ, ओके, उसका सेकेंडरी इंपैक्ट में फिर अर्थक्वेक आ सकता है, तो इसीलिए शॉर्ट टर्म इंपैक्ट में हम क्या करेंगे, वो रेगुलर फोरकास्ट करते रहेंगे कि अभी ये चीज होने को जा रहा है. फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम्स, मतलब उस एरिया में हम ऐसे वार्निंग सिस्टम का यूज करेंगे ताकि वो वार्निंग सिस्टम से उनको पता चल जाएगा अभी भी वो लोग रिस्क की जोन में ही है. ओके, इमरजेंसी मैनेजमेंट प्लान्स फॉर रेस्पॉन्सिबल एजेंसीज. जो रेस्पॉन्सिबल एजेंसीज है उनको, उनके थ्रू हम इमरजेंसी प्लान जो है हर किसी के साथ शेयर करेंगे, उनको जाके बताएंगे, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट करेंगे. अगर कभी खुदा ना खास्ता आपके यहाँ ये सारा चीज होता है, देन व्हाट आर द डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स, व्हाट आर द इमरजेंसी रेस्क्यू मेजर्स दैट यू नीड टू बी अडॉप्ट ओवर देयर, दैट you should be in a safer side. Okay, ये कम्युनिटी बेस में होना चाहिए. कम्युनिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन, इट शुड बी इन ए कंटिन्यूअल मैनर. ओके, प्रिपेयरनेस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स फॉर द कम्युनिटी. हम ये क्या करेंगे, मिटिगेशन में एक पॉइंट आता है प्रिपेयरनेस करेंगे. क्या करेंगे प्रिपेयरनेस ना, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान तैयार करेंगे. मान लीजिए कोई वनरेबल ग्रुप है,
उस एरिया को बार बार हिट करता है डिजास्टर, तो डेफिनेटली वहां पे हम कुछ गाइडलाइंस बनाएंगे, कुछ एसओपीज बनाएंगे जो कि उस एरिया के लोगों को ये मदद करेगा कि वो लोग कुछ हादसा होने पर, कुछ डिजास्टर होने पर, हाउ दे रेस्पॉन्ड टू दैट, हाउ दे मिटिगेट टू दैट, व्हाट आर द इमरजेंसी प्लान, व्हाट आर द इवैक्यूएशन वेज, वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ओके वो कैसे गवर्नमेंट एजेंसियों को सपोर्ट करेंगे, ये सारा कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम में हम लोग उनको बताएंगे। ओके, मॉक ड्रिल्स कंडक्ट करेंगे, ट्रेनिंग एंड रिहर्सल्स भी करेंगे। डू यू नो मॉक ड्रिल्स? Do you know mock drills? What do you mean by mock drills? No, I don't recognize it. Okay, so mock drill means it is a mock exercise. Okay, means means before you suppose you are a dancer. Okay, suppose you are a dancer, or suppose you are going to appear exam of UPSC. Okay, considering that, suppose you are going to appear a UPSC exam. You are a UPSC aspirant, or you are going to appear the UPSC exam. Okay, so what you are doing? You are doing mock tests. Okay, you are doing mock tests. Sir, now I understand. Yeah. So that when a disaster occurs, before that, the emergency preparedness plan should be rehearsed, should be mock exercised over there. Means many all other stakeholders, the disaster responders, okay, the National Disaster Response Force, the fire departments, the government agencies, the Odisha State Disaster Management Authority persons, they came to there, they went there, and they must have to negotiate with the local agencies, and they need to conduct the mock exercise over there. Means they create a scenario like that, and if the disaster happens, then what are the roles and responsibilities of the local peoples, of the of the government agencies, of the disaster responders, of the fire department, of the police department, and everybody, and the hospitals as well. डिजास्टर जब होगा तो हॉस्पिटल का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा, एम्बुलेंस किस रूट पे आएगा, गवर्नमेंट एजेंसीज कैसे रिहर्सल करेंगे, कहां कहां पे उनको शेल्टर किया जाएगा, वो सारा चीज एक मॉक एक्सरसाइज में किया जाएगा। ओके, सो दिस इज नोन एज मॉक एक्सरसाइज। ओके, फिर अभी हम जाते हैं प्रिपेयरनेस। ये सारा चीज खत्म हो गया, डिजास्टर हुआ, उसका रिस्पॉन्स हम लोग क्या देखा, रिकवरी देखा, डेवलपमेंट भी हुआ, मिटिगेशन हो गया। मिटिगेशन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया, प्रिपेयरनेस, सॉरी क्या आया, मॉक एक्सरसाइज। ओके, मिटिगेशन का हाँ एक मॉक एक्सरसाइज। तो मॉक एक्सरसाइज के बाद फिर दोबारा डिजास्टर नहीं होगा, कौन बोल सकता है? तो डेफिनेटली होगा। ओके, तो वो जब होगा उससे पहले हम लोग क्या क्या प्रिपेयरनेस करेंगे। जब भी ये डिजास्टर आएगा तो हम इतना प्रिपेयर रहेंगे, मींस बिफोर डिजास्टर, ओके, बिफोर डिजास्टर एक्टिविटीज इतना प्रिपेयर रहेंगे ताकि डिजास्टर हमारा नुकसान तो करेगा लेकिन उस पैमान पे नहीं कर सकता जिस पैमान पे पिछले बार किया था। समझ गया? तो प्रिपेयरनेस के तौर पर क्या आएगा, वही प्रिपेयरनेस, हम पूरा अपना सामान को रेडी करके रखेंगे, विंड को कैसे ये करेंगे, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग बनाएंगे, फ्लड एरिया में क्या करेंगे, खुद का खाना वाना रखेंगे इसी तरीके से, ताकि हम अगर 5-7 दिन तक एक अपना घर के अंदर रुक गए तब भी हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रिपेयरनेस के तौर पर हम क्या करेंगे, जब भी कोई मतलब डिजास्टर आएगा तो हमको जो रिस्पॉन्डर्स हैं, हम लोग को तो डिजास्टर रिस्पॉन्डर के तौर पर जो हमको मदद करने के लिए आएंगे वो लोग कहाँ रुकेंगे, हम लोग को कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे, क्या करेंगे, रियल चाल करेंगे, ये सारा करके हम इतना तैयार रहेंगे ताकि जब डिजास्टर दोबारा हिट करेगा तो वो हमको उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर। ओके, Yes, sir. okay, then risk reduction. Okay, we have another many few slides. Okay, let us cover up. Okay, देन उसके बाद हाँ रिस्क रिडक्शन। रिस्क रिडक्शन क्या है, हम किस किस तरीका से रिस्क को रिडक्शन करेंगे। सम कॉमन मिटिगेशन मेजर्स आर hazard assessment, हम hazard assessment करेंगे। hazard, what do you mean by hazard? Do you know, विजय लक्ष्मी, what do you mean by hazard? Do you know? I don't know. No, I don't know. No. Okay, so the meaning of hazard is anything which has a potential to cause harm, cause injury, cause property loss is known as a hazard.
मतलब एनीथिंग, मान लीजिए एक रास्ता में एक कांटा पड़ा हुआ है, ओके, हम वहां पे गुजरेंगे, वो कब कुछ नहीं करता है, लेकिन अगर कोई उसको वहां पे जाके अपना पैर रखेगा तो डेफिनेटली वो कांटा उसके पैर में जाएगा, तो एक हजार है कि नहीं? तो वो है हजार। हजार का मतलब ये है वो सारा चीज जो हमको नुकसान करेंगे, हमारा प्रॉपर्टी को नुकसान करेंगे, हमको इंजुरी देंगे, वो सारा चीज को हम लोग हजार बोलते हैं, ओके। देन उसके बाद वनरेबिलिटी एनालिसिस करेंगे। वनरेबिलिटी एनालिसिस आपको बता चुका हूं ऑलरेडी। रिस्क असेसमेंट आपको बता चुका हूं। वनरेबिलिटी रिडक्शन कैसे करेंगे, मिटिगेशन स्ट्रैटेजी क्या होगा, स्ट्रक्चरल और नॉन स्ट्रक्चरल एरिया में कैसे काम करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, इंटीग्रेशन उसका इंटेंसिटी क्या रहेगा, डिजास्टर रेजिस्टेंस बिल्डिंग्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हम बनाएंगे, मतलब मिटिगेशन के तौर पर हम ऐसे बिल्डिंग बनाएंगे ताकि वो ज्यादातर मतलब साइक्लोन में या फ्लड्स में वो अफेक्ट नहीं होगा। अभी उड़ीसा इज द टॉप मोस्ट स्टेट एमंग इंडिया दैट ऑल द शेल्टर हाउसेस, डू यू विजिट शेल्टर हाउसेस इन ओडिशा? शेल्टर हाउसेस? Yes, sir. In school, it's happened. It is not in school, but in maximum areas, the नहीं सर, shelter houses has स्कूल been में होता है। exactly, जो exactly. बात्या के टाइम बनने के टाइम वहां पर जाकर रहते हैं। हाँ, exactly. Those are the shelter rooms. Okay, okay. In village area, it located in schools. Yeah. मतलब it is attached to school areas. Okay, in coastal regions. Okay. So short term preparedness में क्या करेंगे? This prospective process embraces measures which enable governance communities, ये सारा चीज मतलब शॉर्ट टर्म प्रिपेरेशन। सम कॉमन प्रिपेयरनेस मेजर्स आर फोरकास्टिंग एंड वार्निंग सिस्टम्स, जैसे आपको बताया शॉर्ट टर्म प्रिपेयरनेस में मतलब तुरंत अभी अर्थक्वेक गया तो उसके तुरंत बाद क्या करना है, ओके, वो इमरजेंसी अलार्म देना है, फोरकास्टिंग करते रहना है कि घर से मत निकलो, शेल्टर जोन में आ जाओ, सेफ जोन में चले जाओ, तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ रह के काम करने का पड़ेगा, और कम्युनिटी अवेयरनेस एंड एजुकेशन प्रोग्रामों को भी बढ़ावा देना पड़ेगा। रेस्पॉन्स मैकेनिज्म इन इंडिया, इंडिया में रेस्पॉन्स मैकेनिज्म कैसा है डिजास्टर को लेके, ओके। पॉलिसी रेस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट कमिटीज एंड द होम अफेयर्स, एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स, एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्सेस में क्या आता है, पूरा डिपार्टमेंट का मतलब पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी होते हैं हर किसी का रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, ओके। Then the central response can be, central response कैसा होगा, policy responses keeping in view the short long term policy objectives of the government. Administrative response में क्या होगा, broadly relating to operational equipments, उस एरिया में कौन जाकर ऑपरेट करेगा, क्या क्या इक्विपमेंट जाएगा वहां पे, कैसे वो लोग रिहेबिलिटेट होंगे, ये सारा चीज उस रीजन में आएगा। Provisions of central assistance as per existing policy, central initiatives are in the form of visits to the calamity affected area by president, prime minister and other dignitaries, ये एडमिनिस्ट्रेटिव में आ जाएगा, ओके। एक्टिवेटिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म मशीनरी फॉर असिस्टिंग इन रिलीफ मेजर्स में बहुत सारा ऐसा चीज आता है जो कि मतलब उस एरिया में मान लीजिए कि कहीं फ्लड हुआ तो डिजास्टर रेस्पॉन्डर्स क्या करते हैं, वहां उस एरिया में जाके फ्लड जोन में जाके रिलीफ्स बांटते हैं, ओके। बहुत सारा गवर्नमेंट एजेंसियों को लेके उस एरिया का मतलब पूरा रेकी करते हैं, क्या क्या इंपैक्ट हुआ है, उस बेसिस में आप देखे होंगे कि हमारा चीफ मिनिस्टर उस एरिया को जाके एयर बाय एयर विजिट करते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं तो पूरा ऊपर ऊपर घूम के दिखते हैं, एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या वहां पे प्रॉब्लम हुआ है, ओके। फिर उसके बाद अभी ये लेसन हम लोग का खत्म होने को जा रहा है, तो आई थिंक यू ऑल आर एबल टू नो ग्लोबल डायमेंशंस ऑफ डिजास्टर, कहां कहां तक फैला है, क्या क्या टाइप्स का डिजास्टर हुआ, वनरेबिलिटी ग्रुप क्या है, डेवलपमेंट एंड वर्सेस एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट के नाम पर हम एनवायरनमेंट को कैसे नुकसान कर रहे हैं और वो कैसे लीड करता है हम लोग को डिजास्टर के लिए। डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल के बारे में आप लोग जाना, स्ट्रैटेजी स्टेजेस इन डिजास्टर मैनेजमेंट, उसका बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर डिजास्टर उसके बारे में जाना, डिजास्टर साइकिल के बारे में आप लोग को पता चला, मिटिगेशन एंड प्रिपेयरनेस क्या होता है आपको पता चला, और रेस्पॉन्स मैकेनिज्म हम लोग जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रेस्पॉन्स है, शॉर्ट टर्म रेस्पॉन्स है, शॉर्ट टर्म मैकेनिज्म है, ये सारा चीज के बारे में आप लोग जाना। और अभी यहां तक मेरे क्लास के दौरान अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो अभी आप पूछ सकते हो। सर, war is a human-made disaster also. बिल्कुल 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 बिल्कुल, वार इज ए ह्यूमन मेड डिजास्टर, बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट।
Okay, sir. There was no any doubt. ओके, थैंक यू. कुछ टाइम तक आप लोग टाइम दिए, अच्छा खासा डिस्कशन हुआ. मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आया होगा. अगर कुछ डाउट्स है तो यू कैन मेल. ओके. Okay, sir. और नेक्स्ट क्लास के लिए काल का भी हमारा क्लास रहेगा, टाइम वही रहेगा 5:30 to 7:30. ओके. Okay, sir. आ गया समझ में? कुछ कुछ तो आया होगा. Yes, sir. ओके ओके. देन लेट अस wind up the class. Okay. Thank you so much.